Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll start our second lecture of professional ethics, and over here we will discuss different other aspects of professional ethics. And first we will be discuss different models pursued by different professional in their workplace, and after that we will seeing different type of ethics and many other aspects and certain example related to professional ethics. Now we will see two models of professionalism, and these two models will help you to understand that what we are talking about and what we are studying, and why it's important to study professional ethics in your professional degree. When in a workplace, people or most professionals like doctor, engineers, and certain other professionals follow two type of model. Number one is the business model. As the name suggests that over here the professionals try to increase their profit, and they have the specialized knowledge of their specific field, and they want to use this knowledge for their best interest, and they want to protect themselves from any laws or any other regulation which is being imposed by the government. And by doing so, what they do is they'll try to do up to the limit at which they could not be caught by the law, and they will try to impress people that they have specialized knowledge, and which an ordinary person do not have, and based upon that they deserve high income, and they will have to have a monopoly over their profession, and being upon that they can earn maximum amount of money in order to gain their self interest and generate profit. जब हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं ना, तो बिजनेस मॉडल वाले जो हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो और कोई और भी प्रोफेशनल फील्ड में है, तो वो असल में इस मॉडल को जो फॉलो करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो प्रैक्टिस करें तो उसके बीच में इतना काम बस करें कि कोई उनको आके ये ना कहे कि आप जो है ना वो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। और वो हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि लोगों को इस बात पे परसुएट करें, मतलब उनको इस बात पे आमादा करें कि उनका जो है वो, क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और वो एक अच्छा प्रोफेशन परसू कर रहे हैं, इस वजह से वो डिजर्व करते हैं कि उनको ज़्यादा इनकम मिले। फिर एक और चीज़ वो जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट मॉनिटर ना करे, गवर्नमेंट उनके ऊपर ज़्यादा चेक ना रखे, और उस पर वो जो है अपनी फील्ड में उनकी अजारादारी हो, मोनोपोली हो, और वो जितना चाहे जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको कमाएं। अभी अगर आप देखें तो जैसे रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है वो डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ज़लज़ला जब आया था 2005 का, उसके बीच में इस्लामाबाद की एक ज़बरदस्त बिल्डिंग जो थी वो कलैप्स कर गई थी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें ये था कि उन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक बहुत लो ग्रेडेड मटेरियल जो है वो उस बिल्डिंग में यूज़ किया था। तो मतलब उनको इसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को गेन करें, और उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए उनको हर चीज़ जो वो समझते हैं बेहतर है वो करते हैं, लेकिन वो ऐसे काम ऐसे तरीके से करते हैं कि वो कानून के हाथ से बच जाएं। तो इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। Then we have a professional model. Apart from a business model, we have professional model, like engineers and other professionals have an implicit trust relationship with the larger audience. In this case, that is called as a professional model. You people, the person who have the degree and he has the specialized knowledge of any professional field, they think that due to their specialized knowledge, people have trust on them. People think that you have the knowledge, and you are the valuable person of the community, so you will try to serve the community. You will try to use that knowledge in the best interest of the people, and you will not be able to, or you will not try to harm the society, or you will not do any other thing which will harm the society or the people or the community or the society as a whole. So and
obviously when you are following the professional model, you will see this responsibility upon you, and you will try to do your profession or practice your profession in the best possible way, in order to fulfill or order to meet the expectation of their people. Like अगर आप प्रोफेशनल कंट्रास्ट करें बिजनेस मॉडल से प्रोफेशनल मॉडल को, तो प्रोफेशनल मॉडल ये कहता है कि नो डाउट आप जो है वो बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्ट, आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और लोग इस वजह से आप पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ये नॉलेज है, और वो समझते हैं कि आप जो है वो उनको बेहतर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आउटकम प्रोवाइड करेंगे. सो इस किस्म के जो लोग ये मॉडल जो लोग फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसा तरीके से अपनी बिजनेस को प्रैक्टिस करें, या अपने जो भी उनका प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस करें कि जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो. उनको ये डर नहीं है कि गवर्नमेंट उनको पकड़ेगी, उनको ये डर नहीं है कि उनको कहीं पे जो है ना वो लॉ के को बस सिर्फ फुलफिल करना है. उनका कोशिश ये है कि क्योंकि मेरे पास ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास ये जो है वो एक डिग्री है, तो मैं उसको अपने लिए अपने जो है वो लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए यूज करूं. और अगर आप देखा जाए तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी इसमें फॉलो होता है. लाइक अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान बाहर से पढ़ के और फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि उनका दिल में यही होता है कि हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करें, लोगों को जो है वो एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहरिया टाउन को देखें तो लोग बहुत सारी बातें बहरिया टाउन के बारे में करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी उधर की पूरी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं. इवन वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे अगर उन्होंने जू बनाया हुआ है तो उधर एनिमल्स के लिए भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि सर्दी गर्मी में जो है उनके लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम और हर चीज़ अवेलेबल होती है. इवन अगर आप उनकी मस्जिदों में भी जाएं तो वहाँ पर भी आपको रमज़ान में आपको, अगर आप वहाँ पे इत्तिकाफ के ऊपर बैठते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है. इवन अगर आप यहाँ पे देख लें जुनैद जमशेद में अगर आप देख लें तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो वो आपको डिस्क्लेमर्स वगैरह करते हैं, बताते कि जी लाइटिंग की वजह से आपको कपड़े में जो है वो रंग में फ़र्क नज़र आएगा, या अगर आप देख लें तो वो उसके ऊपर अगर चेंज करने में या कुछ करना है तो वो आपको टाइम लिमिट जो है वो देते हैं. सो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशनल मॉडल, कि आप प्रोफेशनल मॉडल फॉलो करें. आप सिर्फ इस चीज़ से नहीं डर रहे कि आप जो है वो आपको नुकसान हो जाएगा, या आप जो है वो लॉ आपको पकड़ लेगा, या मतलब आप लॉ को बाय नहीं करें, बल्कि आप उससे ज्यादा लोगों को दे रहे हैं. आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से कम्युनिटी को सर्व करें और बेहतर तरीके से अपनी जो भी प्रोफेशन है उसका फायदा लोगों को दें, क्योंकि लोगों का आप पे ट्रस्ट है और आप उस ट्रस्ट को मीट करना चाहते हैं. Now, as we say that ethical commitment is very important, or we can say a central to professionalism. So we have to see that what is ethics, and mostly we have to go through professional ethics, and also we have to see that how professional ethics is different from other aspect of ethic, like philosophical ethics, business ethics, personal ethics, and many other. So in answering this question, it is helpful to distinguish between three types of ethics or morality. So first of all, we can see that there are ethics or morality is of three types. First we have common morality, then we have personal morality, and then we have professional ethics. So first we'll go through. Now, first of all, we have common morality. So common morality is the set of moral beliefs shared by almost everyone. So we can say that common morality is the beliefs of people, all the people, almost everyone, that there is something wrong with certain actions. Like we usually think of such a perspective as that it is wrong to murder, lie, cheat, or steal, or break promises, or harm other physically, and so forth. तो हम जब ये कहते हैं ना कॉमन मॉरलिटी, तो कॉमन मॉरलिटी जो होती है वो ये होती है कि वो सबके पास होती है, और सबको लगता है कि ये जो हम बातें हैं या कुछ ऐसे काम हैं जो सही नहीं है, और वो हर बंदा उस चीज़ को बिलीव करता है. लाइक जब हम कहते हैं कि किसी को कत्ल करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चीट करना किसी को, या किसी को धोखा देना, या किसी से चोरी करना, या किसी से वादा खिलाफी करना, या किसी को जो है ना वो मार कुटाई किसी को पे करना जो है वो गलत है. तो
یہ ہم کہتے ہیں کہ دس از کالڈ ایز کامن مورالٹی، کہ یہ کامن مورالٹی ہے کہ ہم کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہیں. سو دا کور آئیڈیا آف کامن مورالٹی از دیٹ آل ہیومن ایٹ لیسٹ آل morally serious people or humans have a pre-theoretical awareness of certain moral norms. لائک ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایک اس کی جو ہے نیچر میں یہ چیز ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک جو مورل ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ہونا چاہیے. سو دا کلیم از دیٹ نارمل ہیومن انٹیوٹ اور ان سم ادر وے know that there is something wrong with things like lying or breaking promises or killing people. لیکن آپ کو پہلے سے آپ کے ایک ذہن میں ہے، آپ کے ایک سب کانشیس میں ایک ہے چیز کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی سے وعدہ خلافی کرنا غلط ہے یا کسی کو مارنا غلط ہے. Thus purportedly universally shared insight can provide the raw data from which ethical theories are constructed. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو آپ کے پاس کامن مورالٹی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو ہے وہ سب کانشیس میں پڑا ہوتا ہے یا سب لوگ اس چیز کو جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں یا سارے اس چیز کو اس بات کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا بن جاتا ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ جو ہے وہ تھیوریز بناتے ہیں. کیونکہ تھیوریز جب ہم بات کرتے ہیں تو تھیوریز کچھ ویریبلس کی ریلیشن شپ کسی اور ویریبل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو اس کے جو ہے وہ ریزلٹ میں یہ کام ہو جائے گا. سو یہ جو را ڈیٹا ہے اسی کے بیسس کے اوپر پھر ہم تھیوریز بناتے ہیں. سو ایز سچ دے پرہیپس اینالوگس ٹو دا را سینس ڈیٹا دیٹ آر ریلائڈ آن ان دا نیچرل سائنس ٹو لانچ دا کنسٹرکشن آف سائنٹیفک تھیوریز اینڈ اکاؤنٹ آف دا نیچر آف ریالٹی. Some common morality theories suggest an analogy between the natural and moral science. سو ہم یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ جو را ڈیٹا یا را جو ڈیٹا ہے جو اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ کامن مورالٹی شیئر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں اور وہ وہی تھیوری ہیں جو نیچرلی جو ہے وہ نیچر بائی نیچر جو ہے وہ سچائی کو یا اس کو شو کر رہی ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ اس میں جو ہے وہ جو آپ کی کامن مورالٹی تھیورسٹ ہے جو آپ مطلب وہ لوگ جو آپ کی کامن مورالٹی کے بیس کے اوپر تھیوریز انہوں نے بنائی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نیچرل سائنس ہے یا نیچر ہے اور جو مورل سائنس ہے ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک ریلیشن شپ ہے اور وہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ obviously وہ بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے کیونکہ وہ نیچرلی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. Now, personal morality, as contrast to common morality, is the set of moral beliefs that a person holds, or a person, or certain person, or it is being held by a certain persons. So, personal morality beliefs may differ from common morality in certain areas. لائک ہم جب کہتے ہیں نا پرسنل مورالٹی، تو پرسنل مورالٹی جو ہے وہ کسی بھی ایک انڈیویژول کا اپنے مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسنل مورل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ڈفر کریں کامن مورالٹی سے کچھ تھوڑے سے کچھ ڈفرینٹ ایریاز میں. سو پرسنل ایتھکس اور پرسنل مورالٹی از اے کیٹیگری آف فلاسفی دیٹ ڈیٹرمنز دیٹ واٹ این انڈیویژول بلیوز اباؤٹ مورالٹی اینڈ رائٹ اینڈ رانگ. This is usually distinguished from business ethic or legal ethics. As like we can say that personal ethics or personal morality is a kind of morality or kinds of standard which is being set by certain person, and they personally thinks that there is certain right or certain wrong with certain kind of behavior. And when we talk about personal morality, so this personal morality is different from business ethic and legal ethics, as these branch of ethics come from outside organization or government, not the individual conscious. So these branches of ethics occasionally overlap, but personal ethic can affect all areas of life, including family, finance, and relationship.
لائک ہم جب کہتے ہیں نا کہ پرسنل ایتھک ہے، تو پرسنل ایتھکس جو ہوتی ہے وہ آپ کی فلسفی کی وہ برانچ ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ایک انڈیویژول ہے وہ چیزوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کون سی چیزوں کو وہ صحیح سمجھتا ہے، کون سی چیزوں کو وہ غلط سمجھتا ہے. اور یہ جو پرسنل ایتھکس ہے یہ ڈفرنٹ ہوتی ہے بزنس ایتھکس یا لیگل ایتھکس سے. کیونکہ جو یہ بزنس ایتھکس یا لیگل ایتھکس ہوتی ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن اور کسی بھی گورنمنٹ کے آؤٹ سائڈ سے آتی ہے. اور جب ہم پرسنل ایتھکس کی بات کرتے ہیں یا پرسنل مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ایک انڈیویژول کے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ اس کو جو ہے فالو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی پرسنل ایتھکس جو ہوتی ہے وہ ہر ایریا آف لائف کے جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، چاہے وہ آپ کے فائنینسز ہو، چاہے آپ کی ریلیشن شپ ہو، ہر چیز کو جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے. Now we come to professional ethics. When we talk about professional ethics is the set of standard adopted by professional insofar as they view themselves acting as professional. Like when people are following certain profession and they have education, knowledge, and skill regarding that profession, so how they'll pursue their profession and what kind of activities they think would be ethical, and what kind of thing or activities they think would not be better or not be ethical when they are following their profession. So when we talk about profession, so every profession has its professional ethic. Like medicine has its own set of beliefs, and they have their medical ethics branch, and so is the case with other branches of profession like law, architecture, pharmacy, and so forth. So when we talk about engineering ethics, it is actually the set of ethical standard that applies to the professions of engineering. That how the engineers should perform, and what minimum or what code of conduct they could follow when they are practicing their profession. And like profession and those working in the acknowledged profession exercise specialist knowledge and skill. So how they use this knowledge that will provide service to the public, which can be of which can considered a moral issue and is termed as professionalism. So it is also very important to understand that professionals are capable of making judgment, and they will apply their skill, and they can take informed decision in the situation that general public cannot, because they have not attained the necessary knowledge and skill. So as contrast to the general public, they have the knowledge, they have the skills to perform certain activities. So they should do that in the best interest of the people who don't know that, or who are not aware of that all the aspects which you know as a profession. So so this is basically professional ethics. And when we talk about engineering ethics, so as engineering is a profession, so you have to being an engineer, being a professional, you are responsible for exercising your skill and knowledge in the best interest of the public, and you should follow certain code of conduct. So that is called as professional ethics. Like when we look into the professional engineering ethics, we see that every country or every engineering society with different countries have adopted a different code of conduct, and they have adopted different aspects uh, which has set up a certain level of behavior which should be adopted by different engineer. But majority of time they have used the certain aspect which try to eliminate certain negative aspect of engineering practice. Like they in certain code they have written focus on preventing disaster. So
or they can say that they should avoid professional misconduct. So they are these would be the negative aspect, because they will try to eliminate negative aspect, but on the other hand they can also follow certain positive effects, that how professional engineering or engineering would adopt a code of conduct which will help in producing better life for mankind through technology. Because as you being an engineer using different kinds of technology, so rather than using certain words which is a negative aspect, which shows the negative aspect of engineering, they should adopt a code of conduct which will help to create a positive environment in the world, or which will help the people, or which will help in producing a better life for the mankind, or better life for the people, because they are using technology. So technology should be used which can ease, or which can bring a better change in the life of the people who are on the planet. Uh, like when we talk about negative face of engineering, so most of the time, as I've said, that they have used preventive ethics. Like preventive ethic is commonly formulated in rules, and these rules are usually stated in code ethics. Like जब हम बात करते हैं ना कि ethics की या engineering की, तो बहुत सारी engineering societies हैं जो मुख्तलिफ countries में हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कोड बनाए हुए हैं जिसमें आपको ये कहा गया है कि जी आपने जो है वो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, like जिसको हम कहते हैं preventive ethics. So for example, code of national security of professional engineering, NSP, says that engineering should not reveal fact, data, or information without the prior consent of the client or an employer, except as authorized by law or this conduct. So मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आप को जो है ना वो क्या नहीं करना चाहिए, आप किस तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है ना वो रोक सकते हैं. सो लाइक हम आपको प्रिवेंटिव एथिक्स की बजाय हमें इसको पॉजिटिव लेके जाना चाहिए. लाइक ये तो उनकी ऑब्लिगेशन है, ये तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिसके ऊपर उनकी सोसाइटी या किसी तरीके से हार्म ना हो, बल्कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लाएं इंजीनियरिंग का, और आप लोगों को इस चीज़ को तरफ कहें कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशन अपना फॉलो कर रहे हैं, वो इस किस्म की चीज़ें करें जिससे आपकी सोसाइटी जो है उसमें कोई फ़ायदा हो, या कोई वो पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके ऊपर लेकर आए. सो हम इसमें जो है ना ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो बताना चाह रहे थे कि जी